In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Students, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 को एंड कर दिया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके थे एंड एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स दे आर रिमेनिंग. तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स की बात करेंगे. एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 5 पार्ट 1. तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, पहले में तो एस इज इक्वल टू आर थीटा जस्ट अप्लाई करना है रिलेशन एंड गेट द आंसर. एग्जांपल नंबर 2, 5 एंड 6. 2, 5 एंड 6. 1 में आप जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा जस्ट अप्लाई द रिलेशन एंड गेट द आंसर. वी हैव द एग्जांपल नंबर 2 इज देयर स्टूडेंट्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और ये मोस्टली स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में लाजमी आती है. अब इसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 revolution per second is switched off. It comes to rest in 18 seconds. Assuming deceleration to be uniform, find its value. आपने एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो डिसेलरेशन हम ये कहेंगे. हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कम टू रेस्ट एंड यू आर लुकिंग फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल. अब सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे initial angular velocity, so it's omega I and it's equal to 3 revolution per second, so that is the omega I. And then we have the final angular velocity, it comes to rest, I mean omega f is equal to 0. So time is here, t is equal to 18 second, 18 second, so that is the time we have. Time is here, t is equal to 18 seconds. What we are looking for, we have to find out the angular acceleration, I mean alpha, and beta is theta. So theta is another target, angular displacement. And you can write on by definition. By definition, alpha, I mean angular acceleration is delta omega over t. Delta omega mean change in angular velocity, it's omega f minus omega I divided by t. So putting the values, omega f it is equal to 0 and omega I is equal to 3 revolution per second, so that is in 3 and divided by 18 and it comes to be minus 0.167 revolution per second square. So that is the value of alpha we have, and it's negative, so that's why it is deceleration. So that is the angular acceleration, it's a negative value, so that's why it is deceleration. And what's the next target is, I mean theta is angular displacement is your target. Next one, angular displacement. So using the relation, So we all know the second law of motion, S is equal to VIT plus half AT square. और एंगुलर मोशन में आपने यही रिलेशन आपने इस तरह से लिखना है. S की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, VI की जगह पे ओमेगा I टाइम एज इट इज प्लस हाफ A की जगह पे अल्फा एंड देन T स्क्वायर. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा I T plus half alpha T square. And so inserting the values, omega I, so that is 3 revolution into time is there, that is 18 plus half alpha is equal to minus 0.168 minus 0.168 and T square, so T is there, so that is 18 square. So look at here the second equation of motion, that is S is equal to VIT plus half AT square. अब एंगुलर मोशन में आपने थीटा मेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वैल्यू लगा दें. मेगा 3 इंटू 18 प्लस हाफ अल्फा माइनस 0.168 टी स्क्वायर, यू वी आल नो इट्स वैल्यू इज 18 स्क्वायर. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you must get 54 minus 26.4 and after simplification you get
27 revolution. So theta is equal to 27 revolutions. It means the number of revolutions of electric fan before coming to rest is 27. So students, that is very important example, and you must 100% clear about this example. And now students, we have another example is there. I mean the example number 5 is there, students. We have the example number 5. Students, look at the example number 5. The mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. So that is the mass of the earth. M is equal to example number 5. Example number 5 is mass is there and it's equal to 6 into 10 raised to power 24 kilogram. So that is the mass we have. And then we have the distance r. So that is r is here and its value from the earth to sun when 1.50 into 10 raised to power 11 meter. So that is the value of r we have. And the time taken. So the time is there and its value is 3.16 into 10 raised to power 7 second. So that is the time we have. Orbital angular momentum of the earth. So LO is your target, angular momentum. So that's the target here. So the distance between this, it traverses a circular orbit around the sun once in a year. So time is there 3.16 into 10 raised to power 7 second. So students, we have these values, and using the relation, how we can solve it using relation. Using relation is LO is equal to mvor. So that is the mass we have, that is the orbital velocity, that is the distance, r is there. And we know that to find the earth's orbital angular momentum, we must know first its orbital speed from the given data. When the earth moves around the circle of radius r, it travels the distance equal to 2 pi r in 1 year. 2 pi r, that is circumference of the, and in 1 year, so we must have v naught is equal to s over t. So in 1 year the distance is 2 pi r. So that is 2 pi r, and time is equal to, that is small t. Orbital angular speed of the earth, and now we have this value, putting this value in the above equation. So that is the equation number 1. So putting this value in the above equation, we get LO is equal to MVO, mean 2 pi r divided by t into m. So MVR, so that is equal to this, so r. So putting this value v naught in that equation, 2 pi r over t into r. So we must have, so it is 2 pi r square m divided by t. So that is the orbital angular momentum, 2 pi r square m divided by t. So that is 3. So putting the values, we have 2 into 3.14 into r is there, r is 1.50 into 10 raised to power 11, that is in square, and mass is 6 into 10 raised to power 24. So that is the mass divided by t. T is equal to 3.16 into 10 raised to power 7. So by using these relations, students, look at again here, we have the angular momentum, orbital angular momentum is equal to mv naught, rv naught is equal to s over t. So s is circumference of the circle, that is 2 pi r divided by t, 2 pi r over t. So just multiply 2 pi r square m divided by t, and inserting the values, students. So just putting the values, pi is equal to 3.14, r is there, and the mass of the earth, that is 6 into 10 raised to 24, and we have the time is there
So that is 3.16 into 10 raised by 7, and if you just simplify, and you must get the answer, that is 2.67 into 10 raised to power 40 joule second. So that is the right answer of this example, students. So that's the example number 5, students. And now we have another example is there. I'm in the example number 6, students. Example number 6. Example 6 is there. A disc without slipping rolls down a hill of height 10 meter. Height is 10 meter. If the disc starts from rest at the top of the hill, what is its speed at the bottom? You are looking for, the height of the hill is there, h is there, and its value found to be 10 meter. So that is the height we have. And speed of the disc at the bottom. So that's your target. V is your target. यानी speed of the disc at bottom. बॉटम पे इसकी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट? यहाँ पे हिल की हाइट गिवन है और इससे डिस्क जो है वो रोल्स डाउन करती है, और जब वो बॉटम पे पहुंचती है तो हमारा टारगेट ये है कि बॉटम पे उसकी स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स. एंड वी नो द रिलेशन, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव द रिलेशन इन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में. हमने ये रिलेशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ये रिलेशन, और इसी को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है. फॉर डिस्क, for disk we know the velocity v is equal to, for disk, 4 over 3 square root into g square root. So that is the relation we have, 4 over 3 square root into gh. So putting the values 4 over 3, g is 9.8 and h is there, h is equal to 10 divided by 3. So you must know about this. V is equal to 4 over 3 gs square root, 4 into g is equal to 9.8, h is 10 divided by 3. So you just divide it and we must get answer. So that is 392 square root. And if you just square root, applying square root, we must get 11.4 meter per second. So that is the orbital velocity we have. So that is V. V is there 11.4 meter per second. Now students, come to the exercise. We are the numericals. Students, examples complete हो चुके हैं. Come to the exercise here. We are going to solve the question number 1. Numerical number 1 is here. So यहाँ पे लिखा हुआ जी, a tiny laser beam is directed from Earth to Moon. If the beam is to have a diameter 2.50, so that is the diameter of the beam here, 2.50. So that is S is there, students. That is the arc, length of the arc. It is the arc, length of the arc. It is denoted by S, and S is equal to 2.50 meter. अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये लेज़र बीम जो है ये मून के ऊपर फॉल कर रहा है, और ये मून के इसी एरिया में फॉल करेगा. तो सिंपल सी बात है, इसे हम आर कहेंगे, और ये 2.50 मीटर के बराबर है. अब देखिए, इस मून को अगर आप रोटेट करते हैं तो इट बिकम अ सर्कल. यानी ये अगर आप इस लेज़र को रोटेट करेंगे तो इट बिकम अ सर्कल. और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? जितना डिस्टेंस होगा मून और अर्थ के दरमियान. ये आपने याद रखना, मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं. यानी इसको अगर बीम को रोटेट करें सर्कल में तो सिंपल सी बात है, उसका जो रेडियस होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ. सो दैट इज आर इज हियर, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3.8 into 10 raised to power 8 meter. So that is in meter. So that is R. R is here. Divergence angle, you are looking for the divergence angle. Theta is your target. Theta is your target, students. Now you will apply the relation, students. अब आप यहाँ पे relation apply कर दें. We know that. S is equal to R theta. So that is S is equal to R theta. And if we calculate the theta is equal to S over R.
So by putting the values, S is there 2.50 meter divided by R. R is the distance between moon and earth, and its value found to be 3.8 into 10 raised to power 8. And if you just simplify, you must get answer 6.6 into 10 raised to power minus 9 radian. So that is the value of theta over here. So that is equal to डाइवर्जेंस एंगल. स्टूडेंट्स ये डाइवर्जेंस एंगल की वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 रेडियन. दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, हम बात करें एस की वैल्यू, ये आर्क है, एस की वैल्यू 2.50 मीटर, रेडियस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है अगर आप इसको रोटेट करें तो इसका रेडियस जो है वो आर के बराबर होगा. और थीटा डाइवर्जेंस एंगल इज योर टारगेट, थीटा इज आवर टारगेट. अप्लाइंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर. और आपको मैंने बताया था जब ये रिलेशन हमने किया था तो स्टूडेंट्स जब भी आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे थीटा का यूनिट हमेशा रेडियन हो करता है. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. नो वी हैव अनदर क्वेश्चन. आई मीन क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड turntable from rest, so that is omega is at rest, so that is 0. Omega is equal to 0. And similarly find angular velocity omega f, and its value found to be 45 revolution per minute. 45 revolution per minute. And 45 one revolution mean 2 pi radian. Per minute means 60, and it's radian per second. And if you just simplify, you must get answer 1.5 pi radian per second. So that is the omega f, that is the angular velocity students. And time is there, and time is equal to 1.60 second. So let's look at again here. We have the initial angular velocity is 0, final angular velocity 45 revolution per minute, 1 revolution 2 pi radian per minute. Minute is equal to 60 second. And after simplification you must have 1.5 pi radian per second. And the time is there, that is 1.60 second. What is the average angular acceleration? So alpha is your target. अल्फा की वैल्यू को, एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने कैलकुलेट करना है. तो उसमें यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करेंगे. वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू, that is equal to delta omega over t. Delta omega mean final angular velocity minus initial angular velocity divided by t. Omega f minus omega I over t. So putting the values, we have omega f is equal to 1.5 pi, and initial angular velocity that is 0. So time is there, and it's 1.60. And after simplification you must get answer, that is 2.95 a radian per second square. So that is the average angular acceleration. Look at again here students, alpha, that is the rate of change of angular velocity. Alpha is equal to delta omega over delta t. So t is there. Omega mean final angular velocity minus initial angular velocity divided by t, and alpha is equal to 1.5 pi minus 0 divided by 1.60, and after simplification you must get answer, that is 2.95 radian per second square. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमने आज एग्जांपल्स को सम अप किया है. और फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स. ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स. आप कंटिन्यू बेसिस पे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को याद करते रहें, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट वो रेगुलर बेसिस पे, आपको पता है कि टेस्ट का शेड्यूल जो है वो आपको प्रिंसिपल साहब ने दे दिया है, उसको आपने उसी के अकॉर्डिंगली याद रखना है. और टेस्ट की कंपोजिशन मैं यहाँ पे बताता चलूँ. टेस्ट की कंपोजिशन स्टूडेंट्स ये है कि फर्स्टली आपको ये बताना है 10 MCQs होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स, एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स. इन सारों को ऐड करें स्टूडेंट्स, 10 MCQs, 6 short questions, 6 into 2 you get 12,
और 8 मार्क्स आर लॉन्ग क्वेश्चन. 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 10 यू गेट 30 मार्क्स. और ये टाइम लिमिट इसका 45 मिनट. थैंक यू ऑल स्टूडेंट.